हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश कुशवाहा। आज हम एक यूएस बेस्ड आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और एंटरप्रेन्योर सुमित उत्पल मेहता के एग्जीबिशन में आज आए हैं और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने एग्जीबिशन में क्या रिप्रेजेंट किया है, क्या एग्जिबिट किया है, क्या उनका कंसेप्ट है और वो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन जो आर्ट स्टूडेंट है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो सुमित, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड let me know about your journey of art and what you try to exhibit here and represent here, please. Thank you, sir. So, I'm Sumeet Uppal Mehta. I'm an alumni student of Lalit Kala Sansthan. I passed out in 2009. Uske baad, I did a solo exhibition in 2010 in South India. So, I migrated to Southern India and I was, that was a new culture. They are very, very into the folk art. But I placed an exhibition on contemporary art. और उसके बाद I migrated to US in 2011 and उसके बाद my journey started in US. It was a hunting, to be very honest, and before going further I'm really thankful to Ganesh sir. It's an honor to be with him, to meet him back after years, and sir ka bhi aise, like I'm so happy like he has a YouTube channel and then we can share the art and the journeys of all the different artists. So again, back to US. US is a different land. It's not an easy land. You don't get licensed very easily. The journey, what I have experienced there, you have a lot of art scope and every art scope is different. I have seen sculptors, I have seen graphic designers, artists, and of course in the multimedia, in the applied commercial work. So the first thing is like research and observe, I think. कोई भी business या step करने से पहले if you have a direction, then the road is easier. So I was very stubborn कि I have to continue and pursue in my own field. I do not have to change it. बहुत सारे circumstances थे कि art was not easily समझ नहीं आता था. US is all IT world. My husband is in IT world. He's very supportive, but again, art kya hai, what is fine art, what scope you have, it's not an easy ride. Gladly, I kept on meeting the gallery people. The first thing I learned in the art industry is you should have contacts. So contacts are very, very important. It's not कि आप रोज जाओ मिलो, but contacts like आप visit करो. जितनी galleries हम visit करते हैं, कोई भी galleries हम जा रहे हैं, तो we see कि बहुत सारे artist लोगों का काम होता है, तो why not we? तो एक ये चीज़ कि if they can put a work, वो कैसे करते हैं, कैसे पहुँचते हैं, क्या procedures हैं, कितने का sell out होता है, कितना आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत important है. Gradually migrating to other states. First I was in Texas, then I moved to West Virginia. West Virginia में it was a land of all the teachers. So तब लगा कि अपनी degrees evaluate करके teaching job and all. जब तक मैंने वहाँ से देखा, then I showed my work. People have seen my work. I started putting my work on the Facebook and all. Then I learned from there कि उन्होंने जब मेरा fine art का काम देखा, they suggested me कि whenever if you're applying for the teacher job, do not go to the elementary section, go to directly to the college level people. So at least you have a state of mind clear कि okay. And वहाँ पे जो teachers थे, they shared their journey कि when they came to US, तो उनको क्या convert करना पड़ा and how much experience this US people are counting. So then I learned कि experience is very important. अगर आप US में हैं, तो US experience is very important because you are not doing a job और आपको अगर if you are not pursuing any studies because already you have bachelor's and master's, so you do not need to redo your study. Then I migrated to New Hampshire. New Hampshire is a land of art and I'm like fortunate to be there. So first thing I met there, मैंने वहाँ पे galleries और art college में I just went there and I was looking कि क्या काम होता है, कैसे करते हैं. Then I learned from their director and HOD. She saw my work. उन्होंने कहा कि
this work is awesome, we are keeping it. They wanted to share my work to other students कि वो लोग आपका काम देखें, क्योंकि उनका तो मैं देख ही रही थी. They also work beautiful. And second step was like you have to do MPhil अगर आपको उधर जाना है. So this is what, like MPhil is a different course, that's a regular, and then you have to have a praxis exam. So if anybody wants to pursue in US, at least you know the praxis exam is important. Then I met the HR and all, and then I learned like praxis exam is something कि अगर आप वहाँ हैं तो it depends with different states. अगर आप एक state में कर रहे हैं, might be अगर आप दूसरे state migrate करते हैं, they will not accept it. Then I thought, okay, this is not my journey. I am not going to wait for this because I know my husband has a migrating job. कल को वो इधर से उधर गए, फिर मेरे सारे साल खराब. I don't want to do that after investing my 3 to 4 years. Then gladly I was dying. So I started doing volunteering. So there was a local library. बस गई वहाँ पे देखा and I just started कि okay, let me do it because I wanted to do something. कुछ नहीं, it is not about monetary कि मुझे मिलना चाहिए. I did free of cost उस time क्योंकि I just enjoyed my work and I wanted to put it out. I wanted to learn their work and I wanted to share my work. और वहाँ से करते कराते, you know, it just reached the school. वहाँ पे everybody started appreciating. पहले students saw, then the parents joined, and then the adult. They are in 60s, 70s or 80s. They learn art from me. So we kept putting an exhibit, we kept putting a workshop, art workshop. So that I kept counting in my portfolio. So I was like, if I'm doing, at least I have a portfolio. I am not wasting my years. And then gladly there was a visit. There was my friend's dad, Jo Mumbai, like he's from Mumbai, and he visited his daughter, and he's a patent officer. So he does the patent and registrations and all. He came to my house and he saw my work. Uske beach mein I remember I had the work on canvas. That is all about food again. I think that was like the food thing was very clear. Because the subject I chose was food, that was food and work. Ki when you migrate, travel, the food is something which keeps you together. It's a paramount way of cultural interactions, no matter what. मैं जहाँ जा रही हूँ, new places and all, if I want to be a friend, if I want to be in touch, that is food. You have a lot of festivals, you have a lot of gatherings, and you have different traditions. So I was very clear, okay. So he and I submitted, there was a juried art gallery. There's a huge and renowned gallery in US in West Virginia. It's Tamarack Art Gallery. I think in 2016 or 15, I submitted my work there, and gladly 2 of my work got juried there. So that was a huge gallery, setup and celebration where I came to know. I saw a lot of huge works, small works, graphics, sculpture, everything. It was at very large scale. That was the first time I learned what their art is and what they do and what they accept. So gladly those work was on my wall at my home. And when he visited me, New Hampshire, he just asked me, "You made it?" I said, "Yes." "Kya kar rahe ho?" And I was like, "I don't know. I have to do license issues and everything." He said, "Okay, come to me and I'll make your brand." I was like, "What make your brand?" I have no idea. What he's talking, I had no idea. And then he suggested me, you should have a brand, whatever you're doing, start doing, don't wait for anything. And he was glad that I was not even waiting for anything. I was just keep continuing. I needed a direction. I have everything set up. So gladly with him, we came across and I made my brand, Mylinis we started in 2017. We finished in 2018. So we got registered, Mylinis. Mylinis is not, again, my daughter was doing work. I started doing with her of like US art contest and all, and gladly she was picked. Then I was understanding the culture and concept of US art, like what they accept, what they know, detailing work. And gladly Gracelynn, I think her like genes inherited. So she is very good in figure sketching and all. After that, gladly Mylinis was built. I designed my work. Then we find the like websites and all these like design workers, like kaise karana hai, how to continue and all. Okay, gladly after Mylinis, we got registered in US and in India, so that I should be connected to my roots, and I'm there, so I need a brand there. And Mylinis is a family name venture. It's not like Sumeet, because if my daughter is doing, I didn't want it to keep it to me. Ye sirf mera hai, because she's also part of it. And maybe,
my younger one will do it. So my lineage means mine, Lynn, my daughter's name Savalin Gracelynn, and I stands for Rishpreet, my husband name S Sumeet. So it's all a family venture. Jisko karna hai after retirement of my husband, I think he'll come back to my business. And so he's a financer, of course, but after retirement, at least we have a family business name. So this is what my lineage. Again, then I started working as a collaboration. My lineage ko आपको rise up करना है. I started advertising my lineage. Then I made a group. It was a heartiest community club. I worked for the schools and all. They started calling me, where I was teaching them pura Indian culture. So art, and then some culture, like they were doing dance and all, costume designing and all, and the show. It was an art expo. We did 2 years. So all the parents were there, school principal, teachers. So they really supported this. तो पता चलता है कि they are liking your work and all. और तब भी time था, they were all Americans. They even don't know what Diwali is, but now gradually they are understanding the festivals. So again, after years and years, I started hosting my art contests all over US, India. It's like people are coming in contact. Once I did for the India from US, people from Pakistan, people from Karachi, people from different states here, they participated and they really enjoyed. Keep bringing this format, art contest, so they are able to participate. We do locally and all. We started doing art cultures, and then I help students to participate all from like US, from different states, online, in person, and their parents and the grown-ups, how to participate in art contest. So easier said than done. करके आप नहीं भेज सकते. They are very, as you know, अगर if you want a ranking, you know your standards. क्या choose करते हैं, what the color combination, how they are thinking. So gladly we kept getting good results. बहुत selections होने लगे students के. They are getting awards. So now like Mylene is like Mylene, people wants to come join. And now I have experience वहाँ पे जितने भी art contest हैं, कैसे आप उसमें participate करें, and then children get a direction. It's not about winning, it's about participating. So art contest you organized online, it was offline? Both. So Mylene organize art contests in person, Okay. and like online as well for other states of US. So in your upcoming art contest, students from here can also participate? Absolutely. I would love that. Oh, that's great. People, students from here, they can participate, and then we can do more collaboration. Like I said, Mylene, they know people will come. The funding has started. So धीरे धीरे करके at least they'll get. And also like if I am from Mylene, the art people knows it, like they know the depth of a people. And if I'm from India, I know यहाँ पे क्या accept हुआ, and US में what they see. The main difference of India and US art, they are very logical there. They will not appreciate कि आप किसी से काम करा कर दे दो. आपका काम चाहे छोटा सा भी हो, but they see the logic behind कि उसके चाहे आप स्क्रिबल करके दे दो, बट वो पिक हो जाएगा क्योंकि लॉजिक. इट्स नॉट, दे आर नॉट कंपीटिंग विद अदर पीपल कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. दे आर नॉट आस्किंग यू दैट. आप करो लेकिन लॉजिक करो, थॉट स्टोरीज क्रिएट करो, नेचुरल वे स्टोरीज होना चाहिए, कनेक्शंस होने चाहिए. आप अपनी आर्ट को कैसे एक अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपकी आर्ट में कैसे डेप्थ में आ जाएगा. सो अगेन इट्स अ स्टोरी टेलिंग. आप अपनी आर्ट से स्टोरी टेल कर सकते हो, आप फोटोग्राफी से कर सकते हो. तो माई लिलीज में आप फोटोग्राफी करते हैं, फूड फोटोग्राफी, एंड यू आर आर्ट इंस्ट्रक्टर एंड यू आर आर्ट प्रैक्टिस. Yeah. So I started like an art mentor. I teach people how to continue and pursue with art. Now the parents come to me. बहुत drastic change मैंने देखा है like past 2-3 years में. People come to me and tell them my child is interested, उसको करना है, लेकिन बाहर के लोग कह रहे हैं कि आर्ट में क्या करना, बट हमें अपने बच्चे को कराना है. So this is a difference where parents are standing. वो बाहर निकल के आ रहे हैं सबको छोड़ के कि if their child is interested in art तो उसको कैसे आगे लेके जाए. एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि स्पेशली इंडिया में कि आर्ट में स्कोप क्या है, आर्ट एज ए प्रोफेशन, ये एक सवाल थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर लोग आर्ट का स्कोप मतलब कि जॉब, टीचिंग जॉब, इसके अलावा और चीज़ें लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते. इसके बारे में आप क्या?
तो इसके लिए बहुत इजी एग्जांपल मेरी ये आर्ट जर्नी थी, लेकिन 6 7 8 ईयर्स पहले मुझे फोटोग्राफी का एक ऑप्शन मिला. आई वॉज अनेबल टू डू, मेरे पास एक छोटा बच्चा था, माई हस्बैंड वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज ऑल अलोन, एंड so it was not easy. You know, my elder one was like 4 years 5 years and newly was just born. और उससे पहले भी इट वॉज नॉट ईजी कि आप करो कैसे दिखाओ अगैन. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सुना कि फोटोग्राफी क्लब है, चले गए बैठने. आई डोंट नो देयर कल्चर, दे डोंट नो माइन. तो अगेन दिस इज व्हाट आई वुड लव टू से कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कर लो. यू नेवर नो कि वो कब काम आ जाए. जैसे फूड फोटोग्राफी करते हैं तो क्लाइंट्स के लिए तो मैंने फूड फोटोग्राफी वहाँ से सबसे पहले आई लर्न द कैमरा बेसिक. वो मुझे 5 6 ईयर्स लगे कि कैमरा कैसे अपने हाथ में मैनुअल में कैसे करते हैं. यू आर नॉट डूइंग एन ऑटो, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको प्रोफेशन तरीके से वो चीज़ें आनी चाहिए. स्किल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना आप 4 5 चीज़ें कर लोगे वो ईजी नहीं होता. स्किल इज इम्पॉर्टेंट. देन ग्लैडली रिसर्च करते करते आई वॉज फोकस इन लाइक फूड, कैनवस पे थे. तो अगेन फूड से डिफरेंट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ भी किया, बहुत किया, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती ना कैसे. देन अगेन ग्लैडली आई रिसर्च एंड देन आई केम अक्रॉस कि एक फूड इंडस्ट्री है, कि वो एग्जिस्ट भी करती है, बहुत बहुत एक्सट्रीम पर है, बहुत हाई डिमांड है. और फूड इंडस्ट्री इज़ नॉट ईजी. अगर आप उसके अंदर घुसोगे वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है. बट अगेन देन आई क्रिएटेड माई अगेन सोलो बिजनेस, सुमीत मेहता's फोटोग्राफी, जहाँ पे लाइटिंग सीखना इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको आर्ट का डायरेक्शन आता था, आपके पास थॉट्स हैं, तो वो इजी हो जाता है. स्किल्स नए सीखने पड़ते हैं. कैमरा चलाना सीख लिया, लाइटिंग्स कैसे करते हैं वो मैं आज तक किसी ना किसी की, सबके एक मेंटर्स होना इंपॉर्टेंट है. जैसे आर्ट में चाहिए तो आई टीच एज आर्ट मेंटर. मेरा फोटोग्राफी का मेंटर्स कोई और है जिससे मुझे क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं. सेकेंडली आर्ट क्रिटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई देगा तो आपको समझ में आता है कि अपनी आर्ट को इम्प्रूव कैसे करना, मार्केट में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए, तो आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. अगेन ये जो काम है ये क्लाइंट बेस्ड काम है. हाँ, तो ये बेसिकली हमारे रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट के लिए मुझे इंडियन तरीके से काम करना होता है. दैट इज़ वॉट नेपाली. बहुत सारे यूएस इज लाइक अगेन कल्चरल थिंग. वहाँ पे जापानीज, चाइनीज़ एंड अगेन यूएस का फूड, कॉन्टिनेंटल फूड और डिफरेंट यूके के फूड इज़ वेरी डिफरेंट. तो उसको उस फूड को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फूड को कितना टाइम फ्रेश होना चाहिए, कलर्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये एटलीस्ट हमारे फाइन आर्ट में नॉलेज है. स्किल्स सीखने पड़े कि आप कंप्यूटर्स पे वो पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे. सो अगेन कहीं ना कहीं से वो चीज़ रिलेटेड हो ही जाती है. दिस इज़ अ क्लाइंट वर्क. और बाकी जो दूसरा है दिस इज़ लाइक अकेडमिकली वर्क. फाइन आर्ट से पास किया तो अकेडमिकली बहुत मन था, लेकिन दिस इज़ कमर्शियली, क्योंकि आपको चाहिए होता है. जैसे स्टॉक फोटोग्राफी एक अच्छा वर्ड है और लॉट ऑफ इंडियंस आर आल्सो डूइंग वेल इन दैट. I had Sandeep myself, what imagebazaar.com, most creative entrepreneur in Photography. So can you give some light on स्टॉक फोटोग्राफी? अगेन जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आई हैव माई वेबसाइट, बट अगेन आई कैन पुट माई वर्क इन द स्टॉक फोटोग्राफी. वहाँ से जिसको चाहिए, बट अगेन इट्स अ कॉपीराइट थिंग. कुछ लोग फ्री में डालते हैं, कुछ लोग कॉपीराइट. कॉपीराइट इज अगर किसी को आपका काम चाहिए, लाइक दे कैन कम, दे हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो मेरी इमेज को इतने टाइम पे यूज़ करेंगे, इतने के लिए करेंगे, एंड देन दे कैन यूज़. कोई मेरा काम अगर मेरी वेबसाइट से बिना पूछे कहीं यूज़ कर रहा है, मुझे पता चल गया, तो एटलीस्ट आई कैन सू देम. मैं उन पर केस कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है. ये चीज़ें बहुत आजकल कॉपी भी हो रही है. स्टॉक फोटोग्राफी में आप अपना, या तो आप अपना वो डाल सकते हैं, अपना वाटरमार्क एंड ऑल. वाटरमार्क भी एडिट हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आप अपनी फ़ोटोज़ को कॉपीराइट कर दीजिए. आपके पास एक गवर्नमेंट चीज़ होगी, आपने कॉपीराइट उसको सेव कर दिया, फिर आपकी फ़ोटोज़ जहाँ से भी जो जाएँ, कितने कॉपी करते हैं. तो दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग कि आप अपनी फ़ोटोज़ लेकर फिर आप कहीं ना कहीं मार्केट में डालते रहिए. नया चीज़ अभी एआई आया है, तो एआई में भी कैन गिव प्रॉम्प्ट, वी वांट दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफ, एंड वो एआई बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक फोटो बना के देता है. हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट फोटोग्राफी बिजनेस? अगेन आई थिंक डिजिटल एंड अपने हाथ से जो स्किल है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट सब तरह के मिलते हैं. किसी क्लाइंट को डार्क पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, किसी को कुछ, बट आई थिंक डिजिटली एआई, लाइक डिजिटली वो वैसे की वैसे कॉपी करके दे देते हैं.
But a lot of creative possibility is there. creative possibilities. So फिर earlier it was very difficult to hire a model to shoot with lighting, but right now there are a lot of software to those we can just give some prompts. yeah, I want this kind of Indian lady, Indian bride, this kind of costume. It pick that photo will pick up eyes from somewhere, ears from somewhere, costume somewhere, and it will create a very hyper realistic photograph. And that I've seen. absolutely. So that's again going to change the. It's again, it's a market digital world. So बट बहुत क्लाइंट्स पास में आके करते हैं कि उनको अपना कैसे फेवरेट मतलब एग्जैक्टली उनको कलर्स कंट्रास्ट कैसे उनको पिक्चर और स्टोरी टेलिंग चाहिए. सो दोनों के लिए इफ समबडी इज गुड इन कंप्यूटर्स वो वैसे स्किल करे. आप जैसे मेंटर है तो उसमें आप फोटोग्राफी सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, दोनों. दोनों. आई गाइड देम फॉर ऑल. बिजनेस सेटअप कैसे करना है, आर्ट में अगर कर रहे हैं किस डायरेक्शंस में जा सकते हैं, आर्ट कुछ बनाया तो उसमें मैं क्या चेंजेस लेके आ सकती हूँ. सो माय स्टूडेंट्स डू द वर्क. मैं बहुत क्लियर हूँ, आपको भेजना है, आप अपने आइडियाज लेकर आए एंड उसके बाद हम करें. एंड देन फोटोग्राफी, कि अगर आपको फोटोग्राफी में जाना है, जैसे आई हैव हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो फोटोग्राफी उनका सब्जेक्ट है, तो फोटोग्राफी में आगे कैसे अपना अप्रोच कर सकते हैं. राइटिंग में भी आपने कुछ काम किया है, राइटिंग पब्लिकेशन में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. आई थिंक राइटिंग पब्लिकेशन अगर टायर्ड है थोड़ा सा पॉज कर दो, थोड़ी देर उधर जाना है. हाँ. दे आर पब्लिश राइटिंग्स. अगेन राइटिंग्स मैंने जो यूएस में देखा, इंडिया इज वेरी डिफरेंट राइटिंग. इंडिया में क्रिएटिव राइटिंग मीन्स कैलीग्राफी राइटिंग, फॉन्ट चेंज कर दो, कर्सिव राइटिंग. दैट इज नॉट द इंडस्ट्रियल टर्म. इंडस्ट्रियल टर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज एडिटोरियल वर्क. मैगजीन्स के लिए लिखो, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखो, लेकिन उससे पहले आपको आइडिया चाहिए. सो आई एम नॉट ऑनेस्टली अ राइटर, बट माई डॉटर हैज पुश्ड मी इन राइटिंग. वो लिखती है तो कुछ अपना भी मन किया कहीं ना कहीं. देन वी स्टार्टेड पुटिंग फॉर द मैगजीन्स. वो आप अपने फूड के साथ, अपने काम के साथ आप अपनी राइटिंग्स कैसे करते हो, टाइनी सीड जर्नल में देना शुरू किया. देन अगेन ये राइटिंग्स लाइक फूड के साथ आई डिड दैट, कि मैंने क्या बनाया. तो राइटिंग इज अगेन अ गुड कॉन्सेप्ट कि आप अपनी अप्रोच दो ताकि यू नो इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड. अच्छा, ब्लॉगिंग है तो अगेन इट्स अ राइटिंग थिंग. काफी ट्रेंड भी है ब्लॉगिंग में, और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स दे आर अट्रैक्टिंग ह्यूज ट्रैफिक with help of images and writing. Absolutely. So that I can notice. So So- are you connected with blogging and all? I am, and I learned a lot from blogging. Again, it's a Do you learning. have your own blog? I don't have a. I'm not a writer thing, and honestly, so blogging is again a good thing when you where you can, like you said, you attract the traffic. Yeah, So- I've noticed a lot of Very times whenever we ask any question to Google, and they just transfer us to some site, and there are a lot of other kind of ads we have to. ब्लॉगिंग इज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि ब्लॉगिंग इज इन टू वेज. या तो एक आप लाइक सपोज यू आर अ रेसिपी क्रिएटर, आप रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं. सो दैट इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप क्या यूज करें, कैसे करें. देन पीपल वांट्स टू सी. एवरीबडी इज ऑन यूट्यूब दीज डेज. अब ये रिसेंटली आना शुरू हो चुका है. एवरीबडी हैज द फोन्स. तो बहुत इजीली, तो दैट इज अ ब्लॉगिंग कि आप उसमें अपना जो डाल रहे हैं. जैसे आर्ट में, अगर आप स्कल्पचर में ब्लॉगिंग, तो आप अपनी स्टोरी बताएं. पीपल गेट्स कनेक्टेड कि आपने कैसे किया, कैसे बनाया, स्क्रैच से लेकर एंड तक कैसे कंप्लीट किया. बिकॉज जो जनरेशन होती है, अगर मेरे लिए फोटोग्राफी नया, सो आई विल लर्न इट कि कैसे किया, क्या यूज किया, मटेरियल्स क्या किए. तो दैट ब्लॉगिंग हेल्प्स अ लॉट. This thing I'm learning from you, that you have to tell और a story, how you स्टोरी started. क्रिएटिंग, और अपने या हर चीज आप बेस्ट नहीं दिखा सकते. सो हर एक की अपनी लाइफ This होती है. is your images plus creative writing, and there is some your daughter's. Yes. So the Okay. yeah, orders. Sorry, this is the color work on paper. So this is So this she graded on a paper, and she made the illustrations. But again, if you notice expressions, her ek like their expression, eye expression is very strong. This is where This was not how I. Tears Dad came. Wow. So it starts from here. Kaise they are going to the chocolate moon, and it happens. Look at the expressions and eyes. Now Kaise. this is a graphic novel also in trend. Graphic novel.
Basically, it's like a comic, like storytelling. आप हाँ Graphic novels also include. तो वही illustrations, if you know the illustrations, and हर एक का एक format है. Like this was her first kindergarten work, but the Sharon jump for strawberries, colors, and the expressions. If you see the eyes, the expressions, and the end में she said bird. So these details are very important. कि how you make the audience laugh, how you make the audience cry, how you make the audience emotional with the story. This thing I understood that in our like city like Agra in India, the art is very specific to canvas and paper, and being an US artist and entrepreneur, your vision is uh, very wide. It is not just uh, painting on canvas. So every visual experience is an art. Can be Absolutely. explored as art. This thing Art is very wide. very ऑफिस आपका क्या ठीक है तो इसके बिहाइंड की स्टोरी क्या है Yes, very nice. So yeah, आप ऐसे देख रहे हो, this is a lifestyle photography. Lifestyle photography means when you have a person. ठीक है, hands या person is important. I do like a food. Like आप पीछे देख सकते हैं, these are all like restaurants के लिए where they only want the food. लेकिन why I think this got selected for the Claire Who Award for Women Photographer Award and among 66 countries and going for British Airlines because it has a story. तो स्टोरी क्या है? This is a person. My focus is rice food because this is a food photographer of the year, right? They don't want people, they want people, but they want a subject food. So मेरा focus is food. Again, food. I did put lighting on the rice. You can see rice has a lighting, and पीछे भी मैंने rice रखा है, but that's in dull. तो focus is here this because if somebody is working, उसकी पूरी story create करनी होती है. Then the color combination is very important. This is a low light. Low light means it's in a dark. ये एक छोटा सा natural light आ रहा है, window light. This is a artificial light, but again मैंने natural light का look दिया है कि छोटा सा door है and the light is focusing. Grandmother or any aged lady is sitting here. वो पूरा काम कर रही है and this is her kitchen. इनका ये पूरा राइस का पार्ट यहाँ रखा है. कुछ राइस हमने नीचे गिराए थे एज अ स्टोरी. दीज आर यूटेंसिल्स जो और यूज होते हैं एंड दिस इज अ एक्स्ट्रा. मैंने जैसे आप देखोगे फील्ड्स में या ड्राई फील्ड्स में कलर कंट्रास्ट एंड कॉम्बिनेशन देने के लिए आई डिड कीप सम एक्स्ट्रा स्टफ. तो इट इज अ स्टोरी क्रिएशन. तो दिस इज अ डेप्थ ऑफ फील्ड. वो पीछे है. दिस इज अ सब्जेक्ट but the main focus subject is rice. So lighting is on the rice. Dullness is here, natural soft light, and पीछे आप देखोगे you can still see it's a story created because you have all the extra detail work and extra elements here. ग्राफिक डिजाइनिंग का बाहर स्कोप है कि नहीं मतलब कैसे हम लोग स्टार्ट करें अपना I think graphic designing का definitely scope है. सबका scope है. You have again एक strategy implement करो, उसको research करो कि बाहर जाने के लिए sponsorships are very important. ठीक है. I think दो रास्ते हैं. एक you go and apply, do a course. अगर यहाँ से मास्टर्स करके जा रहे हो, बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट 4 years and 2 years, तो यू डोंट हैव टू रिपीट. बट अगेन इफ यू वांट एन एडमिशन और वहाँ पे अपने ही उस पे स्टेप पे जाना है, यू हैव टू डू अ कोर्स. तो आपको F1 वीज़ा लेना होता है. F1 वीज़ा से आप अपना मास्टर्स करो, MPhil करो, वट एवर, एंड देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है. वहाँ से आपको प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं. सो US में काम करने के लिए सबसे फर्स्ट है लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ स्पाउस कि उनके वीज़ा क्या आता है. द अदर थिंग इज़ लाइक व्हेन यू गो एज अ स्टूडेंट. तो स्टूडेंट के लिए ग्राफिक के लिए बहुत स्कोप है. आई हैव सीन एक ही है टेक्सास में, दे आर एंड उनका अपना पूरा स्टूडियो एंड दे मेक लाइक बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ग्राफिक प्रिंट्स एंड ऑल, एंड पूरा करते हैं. और आई थिंक अब के एरा में तो इसको भी बहुत एडवांस तरीके से कुछ ना कुछ हुआ होगा. तो सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू डू रिसर्च. इसको कैसे क्रिएट करके इसमें और स्कोप्स क्या हैं, कुछ नया जो पीपल करें जो मार्केट में नहीं है, या मार्केट में क्या एक्सेप्टेंस है. गो टू द गैलरीज में जाके देखो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम क्या है, व्हाट आर द प्राइजेस, हाउ मच बिग वर्क दे आर डूइंग इट, सेलिंग इट. क्योंकि मार्केट ही आपको जाना है ना एंड ऑफ द ईयर. एंड अगर आप कंप्यूटर्स में कर रहे हो तो वेल एंड गुड, कंप्यूटर्स के कोर्सेज करो. जितना अपना बेस और करोगे, आजकल एवरीथिंग इज डिजिटल. तो अगर आप अपना ये काम को लेके उसमें लेके जा रहे हो तो व्हाट पीपल एक्सेप्ट एंड ऑल.